He comes from a lineage of great sages, yogis, and saints from India. He began his spiritual journey at the age of 7 and was fully realized by the age of 14. During this time, he delved into different practices and acquired mastery over Tantra, Mantra, Yantra, Aghori practices, and Yaksha sadhana. He was a siddha, and many masters, saints, and sages used to visit him in solitude to gain wisdom and guidance from him since that tender age. Although he has been helping humanity since childhood, he never disclosed this part of him to the world, and only the advanced yogis and masters were aware of his divine presence. Only in the last 2 years he chose few people from the world and started guiding them in their spiritual paths, and those who have been closely associated with him have witnessed many miracles in his presence. Despite being a family person, he is a yogi and intends to help people entangled in this world achieve Jivan Mukti, liberation while being alive. He is truly in the world but not of the world, and if you really want to understand him, look him beyond his physical appearance and just sit with him, and you will never be the same again. In his presence you will transcend your body and mind and experience the state of Sat, absolute truth, Chit, pure consciousness, Ananda, eternal bliss. Let us fold our hands in front of his divinity and with a heart filled with gratitude and love welcome our spiritual guru, the realized soul, and our enlightened master, Guru Minash Mishra. असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा मृतं गमया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहम ब्रह्मास्मि। So good morning everyone, and good evening to the people from the other side of the world. स्वागत है आप सभी का एक अनोखे यात्रा पे। It's a very typical different journey altogether, because the name itself rings the bell. And पता नहीं how many of you actually जब ये पढ़े आप उससे क्या समझ में आया आपको, like what did you understood out of that? Can you write it? Can you just let me know what you understood out of that? क्या समझ में आया आपको? So when I wrote this topic, I called up Haribhai last night at 10 o'clock and I said, Haribhai, the topic is this. Haribhai says, huh? हर सत्संग में सिखाया जाता है कि भगवान से कैसे प्रेम किया जाए, और आप ये कहते हो कि हाउ नॉट टू लव गॉड, कैसे प्रेम ना करें। यस, क्योंकि लोगों को सीधा सीधा समझ में नहीं आता है ना, पीपल डोंट गेट इट इन द राइट वे। और जैसे हमारे पुराणों में कहा गया है ना, द ह्यूमंस आर लाइक ए अपसाइड डाउन ट्री, उल्टे पेड़ हैं, और उनकी सीधी बात समझ में आती नहीं है। जब मैं कहता हूं कि भगवान से प्रेम करो 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 करो, आप कहते हो कैसे करें। जब कहता हूं मत करो, क्यों ना करें, तो मुझे लगता है ये आसान वाला रास्ता है। दिस इज मच इजियर पाथ। व्हेन आई से डोंट लव गॉड देन यू विल लव गॉड, दैट वुड बी मच बेटर, है ना।
क्योंकि आप उल्टा समझ में आता है. So when people are understanding that way, we should teach them the same way. It's just like the maze, right? Either you draw the maze from where the mouse is and where the cheese is, or you draw from the cheese to the mouse. But by the end of the day, what we will do is we will draw out of the maze itself. So this is going to be one of the most amazing ones. रिवर्स इंजीनियरिंग हरिभाई कहते हैं. जैसे वाटर प्यूरिफायर में रहता है ना रिवर्स ऑस्मोसिस. सो रिवर्स इंजीनियरिंग, re-engineering how to love God by saying not to love God. So this day, listen to whatever is going to be said. जो किसी चीजों को भी बताया जाएगा, listen to it very carefully and might be not with your ears. ये कान की बात नहीं है. It's not the talk of the ears, it's the talk of the soul. It's like just connecting, because this entire session got out from a question that somebody asked, that when you speak about God and when you talk about whether it is Krishna, whether it is Kali, whether it is Shiva, whether it is Sardama, whichever God you talk about, when you speak about them, the kind of glow that comes on your face, the kind of happiness that we feel by sitting out there, the love that we can see you expressing it in words. The words might not make any sense, but when you speak about them, it becomes magical. How do you love them? You teach us that. How do you love them? You teach us that, so that we also start loving them in the same way. Then I said, then entire session. Because I cannot tell you how I love them, but I can tell you how I don't love them. जैसे कई सारे रंग रखे हुए हैं. There are many colors kept in a box. And then you say, which one is the white? Then what do? You can bring out the white and say, this is white. But the person, if he does not know what white is, then he would ask, why is that green not white? Why that red is not white? Then what do? You remove all the colors out of the box. You say, this, the left one, the one that is left out is white. These are all other colors. उसी तरीके से शायद आपको वो सफेद मिले. मैं सारे रंग निकाल दूंगा, बाकी जो बच जाएगा तो वही शायद वो प्रेम होगा. Because putting those things into words is not easy. So I'll try my best to make you understand through words. So somebody went to some satsang, or कोई शायद online satsang को सुने, and they had a question. They don't attend our satsang, but somebody referred him that if you have this question, you ask, and he will answer you in the most easiest and simplest way. So you can ask him. I said, okay, fine. So they called up. And they said, आपके बारे में बहुत बोलते हैं. मैंने कहा, मैं भी बहुत बोलता हूँ, इसलिए लोग मेरे बारे में बहुत बोलते हैं. मैं भी कम थोड़ी ना बोलता हूँ. So then I said, what is your question? I said, today I attended one satsang and I got into a lot of trouble after that. मैं कहते हैं लोग तो सत्संग अटेंड करते ट्रबल से बाहर आने के लिए. And now you are saying you went into a satsang and now you are in trouble. What happened? नहीं, वो जो बता रहे थे, कथाकार थे. So he said कि जिन के घर में छोटे बाल कृष्ण रहते ना, मतलब लड्डू गोपाल, he speaks with them. मैंने बोला, so what's the trouble? How many of you have that laddu gopal in your house? है ना? Okay, very good. आपसे बात करते हैं वो? अच्छा, नहीं, उनसे नहीं करते थे ना, प्रॉब्लम था उनको. So they said, like, it was a lady actually. So she said, after that I got into trouble. I said, why you got into trouble? No, because my laddu gopal doesn't speak to me.
मैं कितनी अभागन हूं, हाउ मिसफॉर्चुनेट आई एम. Then I listening to that, I said, yes, you are misfortunate. He said, you also agree, na? I said, I agree, but in a different way. बोले मतलब? I said, I consider you to be unfortunate because you have a Krishna at your home and you are still unhappy. तेरे घर में एक छोटा सा कृष्ण तू रखी है और फिर भी तू दुखी है, इसका मतलब ये अभागापन है. This might be misfortune. But why? They said, देख, भले ही पूर्ण रूप से नहीं, कम से कम स्वरूप में तो तेरे घर में है. पूर्ण रूप से नहीं, कम से कम स्वरूप में तो तेरे घर में है और तू उसे नहीं देख पाती. तू ये देख रही हो, बोल क्यों नहीं रहा? अरे वो आके तेरे घर में बैठा ही ये कम है. Is it not enough that it is there at your home? And this is where I will tell you how not to love God. This is how you should not love God. When it is at your home and you are still expecting something from it, I think that is not love of God. Don't worry, there will be a lot of tussle in your brains today. And then only the clarity will come. Then she says, but she said that you give solution for everything. What is the solution? I said, okay, chalo. Anyways, you want a solution. You came to me for a solution. Let me give you the solution. Then I asked, how many kids do you have? I said, 2 kids. I said, very good. 1 boy, 1 girl. अब कुछ लोग बोले, मैंने तो ये सवाल पूछा ही नहीं था. नहीं, आपकी कहानी नहीं है, मैं किसी दूसरे की बात बता रहा हूँ. So I have a son and a daughter. I said, how old are they? Like, one is 7, one is 5. Now somebody assured, oh, no, मेरा बेटा तो बड़ा है. So now when I asked this, he said like one is 7, one is 5. I said, when they took birth, they were speaking, right? So how can that happen? Well, that's what I'm asking you. Why are you getting shocked? I'm just asking you a question. जब वो पैदा हुए तब से ही बात कर रहे थे ना? बोले नहीं ऐसा नहीं हुआ. मैं बोला देन ना, धीरे धीरे बात किए. They started speaking slowly. मैं बोला धीरे धीरे बात कब की है? मतलब पहले आप बात किए या पहले आपके बच्चे बात किए? Are you getting the answer? You are intelligent people. मैंने उसे कहा कि पहले तेरे बच्चे तुझसे बात किए या तूने पहले बच्चे से बात की? मैंने पहले बात की. बच्चा बात करना कैसे सीखा? जब उसने तेरी तरफ देखा. The moment it looked at you and you spoke by looking at you, the kid learned to speak. Do the same with your God. First, you should talk to your God. Then your God will talk to you. अगर आपके घर में वो छोटा सा लड्डू गोपाल है, उसे बच्चे की तरह देखो पहले. You look at it as it is a small little kid. Start speaking to it. अगर बोल नहीं पा रहा है तो सिखाओ. Teach him how to speak. Why can't you? क्योंकि आप उसे बोलते तो लड्डू गोपाल हो, लेकिन मानते एक मूर्ति हो. You only look at it that it is God, oh Laddu Gopal, but you look at it as a statue that I bought from the market at 800 rupees. That's it. That's the problem. और ऐसे भगवान से प्रेम नहीं करते. This is not how you should love God. When you have it at your home, you should have a relationship with it. अगर एक बाल गोपाल को लाके रखे हो, उसको सिखाओ कि देख ऐसे बात करते हैं. Now speak, say my name. Now you have parrots at your home, and how do you teach it?
आप उसे बात करने से वो बात करता है। आप अपने भगवान से बात नहीं कर सकते और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका भगवान आपसे बात करे। मुश्किल बात। आसान बात क्या, आप बात करो। सो आई सेड गो टुडे एंड टॉक टू इट एंड से डाडा, से पापा। फिर आप ऐसे कैसे बोलो? मैं बोला जाके करो फिर बात करते हैं। यू सेड you came and asked me a question, then only I answered yes or no. Said yes. Then I said go and ask him a question, then only he will answer. कोई पागल ही होगा कि आपने कुछ पूछा नहीं और वो बताते जा रहा है, और वो हम हैं, क्योंकि आपने पूछा नहीं लेकिन हम बताते जा रहे हैं, और हमारे जैसे बहुत कम रहते हैं। We are a different category of people. So you don't ask, but we keep on speaking, saying. Why? We have another kind of madness. So that's where I say you go and talk, you teach it, and then you see how your God speaks. How many of you are going to do that? And how would it be? सुन के ही मजे आ रहे हैं नहीं? हाँ, ये सही है, ये प्रेम है. The moment you understand this beauty of this connection with you yourself, with the divinity, when you put down the effort to create that connection, you will experience the direct flow of energy. देखो, दो करंट में अगर दो वायर को कनेक्ट नहीं करोगे, करंट आएगा क्या? There is current there, out there on the socket, but you use something called as a device. That device is called as bhakti. Now, why are we all seeking this? Why are we all talking this? क्यों सुबह उठ के नहा धो के क्यों बैठ गए? ग्रहण था इसलिए नहीं. You just got up and you sat down because you literally want to know the pathway. You literally want to realize, how can one person who is sitting in front of me can be this way? ये कैसे हो सकता है? And that's where the entire journey begins. All of us, हम सब लोग, all of us in this world are seeking happiness. Anyone wants to be sad? चाहते नहीं हो जाते हो, ये अलग बात है. And I don't want to be sad, but I become sad. Now, how do you become sad? अच्छा, चलो, I'll give you one statement today. Make sure, and you will realize that how, when you are sad and when you are happy, you will realize secret solution. Is it okay? You need a secret solution? Okay. Secret solution is, the moment you are not the master of your life, you are sad. The moment your mind has taken over you, you are sad. The moment your body has taken over you, you are sad. But the day you are the master, you are the happiest. Now go and check your happy days. Not the movie, your happy days. And you will realize that that day, your mind and body were not intervening. They were just there. And you were the master that day. And the body and the mind were doing what you said. And when you did that, how was the day? And I believe that's the day you say, wow, kya din tha aaj. So all that we are seeking is seeking happiness, but in installments, trials, errors. So now let us understand, why do we seek happiness? Now when you ask, like कमलेंद्र जी, जब कोई मुझे पूछता है कि आप ये जो कहते हो भगवान को ढूंढो या शांति से रहो या you search for the happiness, why do we do all that thing? हम ये सारी चीजें करते क्यों हैं? मैं बोला बिल्कुल उसी के लिए जिस तरह एक नदी समंदर को ढूंढती है.
Just like the river searches for the ocean, the sea. What does that mean? May said you have to understand why the river is running towards the ocean and the sea. नदी क्यों भागती है समंदर के प्रति? What's your answer? क्या हुआ होगा? नदी क्यों भागती है? समंदर तो नहीं भागता, लेकिन नदी क्यों भागती है समंदर की तरफ? इसलिए नहीं कि वो नदी है और वो समंदर है, इसलिए क्योंकि ये भी पानी है, वो भी पानी है। मैं क्यों भागता हूं उसके तरफ? Why do I run towards it? Answer is very simple. क्योंकि ये भी पानी है, वो भी पानी है। और समंदर क्या कहता है कि जब तक तू मेरे तक ना पहुंचती है तब तक मैं इंतजार करूंगा। What's the promise? The promise is until you reach me, I will be here. मैं यहां रहूंगा। That's his effort. What's the effort of the river? Its effort is to reach out. फिर कहते हैं कि इससे क्या मिलेगा? पीपल हैव वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ना। भगवान को सब कहते प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, उससे क्या मिलेगा मुझे? एंड देन when these questions appear, I laugh. Then I say, see, there can be business, right? बिजनेस करते हैं ना कोई ना कोई। बिजनेस का मतलब क्या होता है? Whatever I give, I should get more than that. यही बिजनेस है ना कमलेंद्र जी? यू आर ए बिजनेसमैन, नाउ टेल मी व्हाट इज अ बिजनेस? कि मैं जितना देता हूं उससे थोड़ा ज्यादा मिले मुझे, वही तो मुनाफा है। व्हाट्स द प्रॉफिट? द प्रॉफिट इज व्हाट आई गेट अ लिटिल बिट मोर देन व्हाट आई गेव, राइट? तो लोग भी वही सोचते हैं कि मैं अगर भगवान से प्रेम करूंगा या भगवान को कुछ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एंड देन आई लाफ एंड आई सेड, नाउ लेट्स गिव ए कंपैरिजन दैट देयर इज अ किंग ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं का राजा एक है, बहुत धनी है, अपार संपत्ति का मालिक, और एक भिखारी है। और जो अपार संपत्ति का मालिक है, द वन हु इज द मास्टर ऑफ ऑल वेल्थ, ही सेज टू द बेगर, you give me whatever you have, I will give you what you need. Means I will give you whatever I have. This is business. वो राजा कहता है कि तेरे पास जो है वो तू मुझे दे दे, मेरे पास जो है मैं वो तुझे देने को तैयार हूं। और भिखारी कहता है कि मुझे क्या मिलेगा? What will I get? अरे तेरे पास खोने के लिए क्या है? जिस दिन तो ये समझ जाता है, जैसे कमलेंद्र जी ने कल बताया कि बड़े मोल से बिका था, आनंद के बारे में ही रखे थे ना, बहुत मूल्यवान था आनंद, मिला उसे जिसके पास कुछ भी ना था। आश्चर्य की बात ये कि मिला उसे जिसके पास कुछ भी ना था। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग जब भगवान को देख के कहते, लाइक व्हेन पीपल लुक एट द गॉड्स एंड दे से व्हाट एम आई गोइंग टू गेट, आई लाफ एंड आई सेड, he is saying give me yourself, I am going to give myself away to you. Who is at loss? Because at times we say अगर नहीं मिला तो, अच्छा नहीं मिला तो लॉस किसका है? तेरा नहीं, उसका है। So when it is ready to give away everything, is it not worth? और देते क्या है हम? What do we give? सोचो एक बार। हमें लगता है कि हमने सब कुछ दे दिया। क्या था तुम्हारा? What was yours? मैं आज 2 घंटे पूजा की। अच्छा, वो 2 घंटा किया, दिया किसने तुमको? Who gave you that 2 hours? अब भी रोक लेगा, इधर ही गिरोगे। The moment it stops it, you will fall here and you say, I gave 2 hours for worship.
हाथ जोड़ लेना, बोला दया है तेरी, it's your grace that I was breathing for 2 hours and I was able to do your puja. I tell you a simplest way. Last night I was, don't worry, nothing has happened. Last night I was opening up a can. Somehow it hit my finger and it started bleeding, and I am searching like from where the blood is coming. Okay, fine. डरो मत, कुछ भी नहीं हुआ, देख लो, कुछ भी नहीं हुआ है. So don't worry. And then finally I located. And when I looked at it, what do? What is the first thing that will come to your mind? You will think like, चलो चलो रे कट गया, चलो दवाई लगाओ, ये करो वो करो. The first thought that I came across in my mind is, बोल किस लिए याद किया? Why did you remember me? And every action of yours can be a reminder of God. When I look at these small little incidents ना सुधा जी, मैं कहता हूं किस कदर तूने मुझे पागल बना दिया है, किस कदर तूने मुझे पागल बना दिया है कि हर एक घाव में भी मुझे अब तू दिखाई देता है. What mad have you made me? Even in every wound I see you. बता तूने कैसे याद किया? Why can't that be? And I love him this way. फिर बोलते, लेकिन फिर भूल क्यों जाते हैं? आपको याद रहता है, हम भूल जाते हैं. मैंने कहा कि मैंने बचपन में ना बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की, तो पूरा मेमोरी बचा के रखा था, आज काम में आ रहा है. आप लोग बहुत पढ़ लिए. So you read too much, so you have spent all your memory, but I have not read too much, so I kept my memory intact. So now it is getting worked out. बोलते नहीं, मजाक नहीं, कुछ दूसरा बताओ. मैंने कहा अच्छा दूसरा, ठीक है, एक प्रसंग बताता हूं. Listen to this beautifully. I just heard it over, somebody shared it over Instagram पे, कोई रील में आया था. It is so beautiful. I think like it is a word of Asutosh Rana ji. Beautiful way he has spoken it. प्रसंग है, like the story goes like this. Ravana and Hanuman are standing in front of each other. And Hanuman is asking, oh Ravana, don't you know who Ram is? And then Ravana says, yeah, I know. My Ishtadev is Devo ke Dev Mahadev, and he thinks about Ram. And when I look at you, I know you are part of him and you are his sevak. And then if I should be killed, with whose hand I should be killed? कि मेरे जो इष्ट हैं, वो जिसकी भक्ति करते हैं, उसके हाथ में अगर मृत्यु प्राप्त हो तो क्या बात है? तो हनुमान कहते हैं, एंड दैट मोमेंट हनुमान सेज, बट यू कुड हैव अचीव्ड द सेम थिंग. You want to get killed through him so that you can get moksha. You can get the same thing by becoming his friend. Why do you choose to be his enemy? And then Ravana says, first I will tell in Hindi. रावण कहता है कि मैं अगर राम से मित्रता करता तो मुझे ज्ञान मिलता, और रावण को ज्ञान नहीं, ज्ञान से मुक्ति चाहिए. Ravana says, if I would have befriended Ram, I would have gotten a lot of knowledge how to get moksha. But Ravana does not need any knowledge. Ravana wants to get freedom from knowledge. रावण को ज्ञान नहीं, ज्ञान से मुक्ति चाहिए. हमें भी कहीं ना कहीं हम भी वही बने बैठे हैं. We have become so intellect that we question it. हम अपने ज्ञान से इतने भरे हुए हैं कि हमें हर एक चीज को तर्क से समझना चाहते हैं. ठीक है, हम तर्क से भी समझा देते हैं. There is one beautiful
Come like Vijay ji, I heard it might be in my childhood. I used to sing a lot of songs on Radha and Krishna because I was वो कहते हैं ना कि हर एक गांव में एक मंडली होती है और वो सब क्या करते हैं होली when you go like the time of mridang and all those things and they sing songs around, right? सब गाने गाते and I was the leading singer in that. अब क्या कहे मतलब अंधों के राज्य में काना राजा, understood? तो हमको like when there was no good singer, I was the best in them, so they like, you are our leading singer. Okay, chalo. And that in that space, when I used to sing a song, there was one particular song in which it is mentioning a beautiful situation of Radha and Krishna. इसे सुनो इस प्रसंग को, यहां से आपको उत्तर मिलेगा. Why you forget? Why you keep on forgetting all these things? And as I said, don't listen with your ears, you have to listen with from your heart. And this, I can assure, will bring a smile on your face. It such happens that one fine day, Krishna goes into the Madhukunj. And when Krishna reaches out to the Madhukunj, what he sees is Radha is fast asleep. वो सो गई है, राधा को नींद आ गई है, राधा सो गई है. But when Krishna goes near him, and what he sees is from every pore of her body, the name of Krishna is coming out. राधा के रोम रोम से कृष्ण का नाम आ रहा है. कृष्ण 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 कृष्ण. And by just seeing that, Krishna says, wow, how much my Radha loves me. And in that thought, Krishna faints. कृष्ण राधा के प्रेम को सोचते सोचते देखते देखते बेहोश हो जाते हैं. Within some time, Radha awakes. And then Radha looks at Krishna, that Krishna is lying down by that side and is fast asleep. But when she looks closely, then she sees from every pore of Krishna, the name is coming as Radha, 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 Radha. Then by looking at that, Radha says, oh, Krishna loves me so much. By looking at that love, Radha faints. Then after some time, Krishna wakes. Then what does Krishna see? Krishna sees that Radha is fallen asleep. And again he looks closely. What does he see? From every pore, what is coming out? Say, Krishna, 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 Krishna. कृष्ण देखते, वाह कितना प्यार है मुझसे. फिर कृष्ण बेहोश. Radha wakes. Radha again what he sees? कृष्ण बेहोश पड़े हुए, सोए पड़े हुए. राधा फिर जाके देखते, क्या देखती है कि कृष्ण के कण कण से नाम निकलता है, राधे 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 राधे. राधा फिर कृष्ण को देखती है, फिर राधा बेहोश. Now what do you think your condition is? What do you think your condition is? It's not that you are ignorant. I simply believe that in a moment you are awaking to such a space where you are feeling that ecstasy, you are seeing the love of God and you are fainting. You're falling asleep. It's not just your karma. It's not just your bad deeds. I think it is your love towards it that you're fainting. Now tell me, is your fainting also good or not? अब बताओ, कैसे प्यार ना करे? ऐसे प्यार ना करो कि मैं तो बेहोश हो गया, मुझे तो कोई होश ही ना रहा उसके प्रेम का. ना ना, आपको उसके प्रेम का होश नहीं रहा इसलिए बेहोश हो गए. नहीं नहीं, आपको उसके प्रेम का इतना होश हो गया कि आप बेहोश हो गए. You became unaware not because you are not aware of his love. You are so aware of his love that you have become unaware. बताओ. अब विजय जी, बड़ा टेढ़ा रास्ता है हमारा.
हम वही कहते हैं ना, उल्टा वृक्ष को उल्टा ही सिखाना पड़ता है, सीधे सीधे समझ में आता नहीं है. But when you are listening to all these things, don't you see the same thing happening with all of us? I come to the satsang, I listen to that, I just become ecstatic. Then what do? I fall. Why did you fall? I fell because I realized that I was so loved by God. आप सोचो, आप अपने मंदिर में जाते हो और वो मंदिर के जो देवता आप रखे हो, द deity that is there in your temple, you go close to them and all that you hear is your name. What will happen? What will happen? Won't you faint? Does that mean like you lost it? You are so dipped in its love that you fainted. आप उसके प्रेम में सराबोर हो गए, इसलिए गिर गए. Now when you people say that I was sitting and I was doing the mala, and I don't know when I lost it. Now tell me one thing, did you lost it or you were so connected at that moment that you don't need the mala? Hello? What's your understanding? होता है ना? होगा. Now you are worried because you are an intellect. आपको मुक्ति नहीं चाहिए, आपको अपनी बुद्धि से मुक्ति चाहिए. किसने कहा तुम सो रहे थे? बुद्धि ने ना. इसीलिए मैं कहता हूं, जैसे रावण ने कहा, रावण को ज्ञान नहीं, रावण को ज्ञान से मुक्ति चाहिए. आपको मुक्ति नहीं, आपको बुद्धि से मुक्ति चाहिए. दैट बुद्धि इज कीपिंग यू सेपरेट फ्रॉम योर गॉड. मेरी बुद्धि कहती है कि मैंने पूजा सही नहीं किया. किसने कहा? भगवान ने कहा? आपकी बुद्धि ने कहा. मैंने कहा मेरी साधना छूट गई. भगवान ने कहा? तुमने कहा. हाँ, यहां पे लेकिन एक याद रखना पड़ेगा कि एक देवी है जिनका नाम माया है और जिसने सबको बहाया है. What is that case? The case is that at times when I just keep on listening to my mind and I say no, कुछ नहीं हुआ, मैं तो बड़ा ध्यान में था, सोया नहीं था, मैं तो मग्न था ध्यान में. तब देखना कहीं माया देवी तो कार्य नहीं कर रही. That's the only thing where you should be aware of. Don't worry, we will catch hold of her. पकड़ लेंगे उसे. माया देवी को कैसे पकड़ते हैं? Let's realize how to catch her. Sorry. Another प्रसंग आता है, एक सुंदर सा प्रसंग. Again, listen to it from. नहीं, कान से सुनो, उसको हार्ट तक ले जाओ. There was one more thing. There was Vishakha, right? राधा की एक सखी थी, विशाखा. Heard her name? सुधा जी तो सुने ही होंगे. सो तो ललिता, विशाखा, ये सब बड़े प्रोमिनेंट नेम से है ना उनके साथ. सो जो विशाखा थी, one fine day she stitched a beautiful cloth for herself. अपने लिए एक सुंदर सा कपड़ा बन लेके आई. The moment she wear that, she looked so beautiful. She looked herself into the mirror and she thought, I should go to Krishna and show him. And by looking at me, he will be happy. ये होता है ना? That I have dressed in such a way, I should go in front of Krishna so that by looking at me, he should be happy. वो खुश हो जाएंगे. Vishakha goes to the Madhukunj. What she sees? Krishna is sleeping. आप बोले आज पूरा दिन भर कृष्ण सो रहे हैं, अब उसकी मर्जी. Today Krishna is sleeping. Now when Vishakha goes and she says, I have decorated myself so well, you are still sleeping, how? Then what she does? वो डायरेक्ट उठाती नहीं है कि कृष्ण का नींद ना भंग हो जाए. She pulls a flower from where,
breaks the petals and throws at Krishna. कि पुष्प गिरने से कृष्ण जाग जाए. और कृष्ण कृष्ण है, वो जागता उसी के लिए है जो जागा हुआ है, और सोता उसके लिए है जो सोया हुआ है. And she is trying to sprinkle the flowers, and then Radha comes. Radha says, Vishakha, what are you doing? No, 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 no. You just see, I have dressed myself so well. I want Krishna to see me and he will be happy. Then Radha says, you have missed one step. Vishakha says, what is the step that I missed? The first and foremost thing you see, you want that Krishna should see you and be happy, so that by seeing Krishna happy, you will be happy. समझ में आया कुछ? तू उसको खुश इसलिए करना चाहती है ताकि उसकी खुशी देख के तू खुश हो जाए. ये माया है. This is Maya. That means ultimately I want to get something. It's not only making Krishna happy. No, by seeing Krishna happy, I will be more happy. कौन ज्यादा खुश होगा? Can you see the bargain here? I have decorated myself. Wow. Why? So that he should see me and be happy. If I have just decorated myself, how does it matter whether he is seeing me or not? All that matters is I have decorated myself for him. That's it. क्या फर्क पड़ेगा उसने मुझे देखा नहीं देखा? सच में वो नहीं देखता क्या? Is there a way that you can hide? Whether it is your emotion or your decoration? You cannot. So इसीलिए मैं क्या कहता हूं, आपको अपनी मुक्ति नहीं चाहिए, अपनी बुद्धि से मुक्ति चाहिए. And that's where you should realize that whatever I do, I will do for him. Does not matter whether it's looking at me or not. मेरा कार्य मैंने कर दिया, अब देखे ना देखे उसकी मर्जी. And then somebody asked again. Then you say like, you saw the goddess? आपने देवी देवता को देखा. What does that mean? I said, what is the meaning for you? And they say कि आप कुछ एक अलग हो, वो कुछ एक अलग हैं, और आपने उन्हें देखा, लेकिन आप ये कहते हो कि आप एक ही हो. I said, absolutely true, logical question. Let me give you a logical answer. The logical answer is, she became me so that she can see herself through these eyes. अब बताओ. She became me to see herself through these eyes. Just like the mirror became the mirror so that you can see yourself in the mirror. Is there an entity? Is there an image in the mirror without you? And I love it in that way. मैं इस तरीके से प्रेम करता हूं. Now, when we love, when we use this word love in this world, you will find that it is always, 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 मानो या ना मानो, ये किसी ना किसी तरीके से सेल्फिश है. इट इज. जाके देखो फिर से. When I use this word love in this worldly form, it is selfishness. Why do I love someone? क्यों धवल जी, क्यों प्रेम करते हो?
कुछ तो कारण होगा। आप कारण से प्रेम करते हो, और जब कारण से प्रेम करते हो वो प्रेम नहीं, काम है। क्या है? जब कभी भी किसी व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु से आप प्रेम इसलिए करते हो कोई कारण से, तो वो काम है। व्हाट इज काम? आई हैव समथिंग टू डू, मतलब कुछ तो कार्य होगा मेरा उनसे, इसीलिए मैं उनसे प्रेम करता हूं। हेलो, समझ में आया ये वाला काम? मुझे या तो अभी उनसे कुछ काम है या उनसे कुछ काम पड़ेगा। आई लव यू, ये भी काम होता है ना, कार्य। आई माइट नीड इज हेल्प टुडे, टुमारो और समडे, दैट्स व्हाई आई लव, ये भी काम ही है। और इन द अदर फॉर्म दैट यू अंडरस्टैंड, काम, क्रोध, लोभ, मोह, in that form also the same thing. So when I am loving that in that way, I love anything in this world, वो काम है। और इसी काम को जो भक्ति में बदल दे वही राम है। Getting that? The one who can convert this काम into Ram is the reality. वो सत्यता है, उसे भक्ति कहते हैं। So when you are in love with God, what do you expect? What do you expect? The one who expects means अभी भी उसकी बुद्धि बाकी रह गई है। Why? क्योंकि अभी भी वो सोचता है, he is still thinking, if I put a coconut, if I put a sari, if I take a basket of laddu, मेरा काम कर देगा। Still in duality, not in reality. Yes or no? See, nothing wrong in that. What I said is understand. First understand, and then the same काम can be converted into Ram. जो आप कर रहे हो उसी को कैसे भक्ति हो जाए? How can each and every act of yours should be converted into that? कैसे बदल जाए वो सारी चीजें? आपका कर्म कैसे धर्म बन जाएगा? So the moment whenever you are saying that I love that God, वो बिना कारण का होना चाहिए। कोई कारण नहीं है। There is no reason why I will love him, because he has already given me enough reasons. Now the question appears, it is not the question that why I should love God. The question is, why should I not love God? And when I say that, why should I love God? Then सुधा जी, मेरा एक जो छोटा सा लिखावट था वो सामने आया, और मैंने कहा कि भगवान से क्यों प्रेम करना चाहिए। एट दैट वेरी मोमेंट व्हेन आई वाज थिंकिंग लाइक व्हाट आई शुड टॉक, धीरे से आके कान में बोलता है, हैव यू फॉरगॉटन दैट यू हैव रिटन दैट? आई सेड वाओ, सो यू प्रिपेयर एवरीथिंग। और देखो, जो आपका इतना ख्याल रखता है उससे प्रेम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उसे कुछ मांगना चाहिए क्या? डू यू नीड टू इवन आस्क? इट्स लाइक आपके मन के अंदर एक इच्छा जागी और वो दे देता है। हैव यू हर्ड ऑफ समबडी नेम्ड एज हीरा चोरा गोपीनाथ? हर्ड इट? नो, नो, it is name of a temple where there is a statue of Lord Krishna. Khira Chora Gopinath. It's in Odisha only. Khira Chora means the one who stole the kheer. जो खीर बनता है ना घर में, पायसम, जिसने खीर को चुराया उसका मंदिर खीरा चोरा गोपीनाथ। उसका नाम गोपीनाथ पड़ा क्योंकि उसने वहां से, वो नाम आज तक वैसे का वैसा ही है। वो मंदिर को भी लोग उसी नाम से जानते हैं ना। अगर मैं आपको चोर बोलूं, इफ आई से यू आर ए थीफ, विल यू एक्सेप्ट इट?
नहीं, देखो, उसको चोर बोलते तो वो हंसता है. व्हाट्स द डिफरेंस? आप उसे गाली दो, चोर बोलो, वॉट एवर यू स्पीक अबाउट हिम, ही स्टिल स्माइल्स. व्हाट बेनोवलेंस? क्या कृपा होगी उसकी हमारे ऊपर. And in that space, let me tell you the small little story. The small little story goes like this. It was earlier known as Gopinath temple. Okay? Means Gopinath means all the gopis are there and Krishna in the between. That is Gopinath. जो गोपियों के नाथ होते हैं, मीन द मास्टर्स ऑफ द गोपीज. और सुधा जी वहां पे कैसा है, आई शेयर सम पिक्चर्स ऑफ दैट. तो ये मंदिर है. सो पहले वो गोपीनाथ था. देन वन फाइन डे, वन एसेटिक, एक साधु वहां आते हैं. एंड दैट एसेटिक, when he comes there, he hears from everyone that the खीर, जो खीर का प्रसाद चढ़ता है ना गोपीनाथ के पास, वो बहुत मधुर होता है. लाइक इट्स रियली टेस्टी. व्हाट दैट खीर इज given to offer to the deity there, it is really really amazing. And the moment he sat down there in front of the temple, it was already evening. And in that moment, by just thinking of the kheer, saliva drooled. मानो जैसे आपके भी अभी बह रहे हैं. So the drooling started. When the drooling started, he was a really good soul out there. He stopped himself in a moment and he said, what am I doing? I am an ascetic and I am sitting in front of the deity in the Gopinath temple and I am thinking about the kheer and it is drooling. That means I have not yet surpassed. मैं अभी तक पास नहीं हो पाया. And in that moment, he said, tonight I am not going to eat anything. I'm just going to take the name of the deity because I have done an error just by thinking about the kheer in front of the deity itself. मेरे भगवान के सामने बैठ के मेरे भगवान नहीं दिखे, मुझे खीर दिख रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई खोट रह गया है. And that day he was, वो कहते हैं ना पश्चाताप करना, remorse, and then you try to make it right by doing some good acts, right? So what he thought that tonight I'm not going to eat anything. Tonight I'm going to just take your name. Oh Lord, forgive me. He was crying, just was thinking about that kheer. सिर्फ खीर के बारे में सोचा इसलिए रो रहा है कि मेरे भगवान के सामने मुझे खीर दिखता है. मेरा खीर, ये छोटा सा खीर क्या इतना बड़ा हो गया कि मेरे भगवान को छिपा दिया. And then he starts crying and he starts taking the name, oh Krishna, oh Krishna, oh Gopinath, oh Gopinath. Throughout the night he is crying and taking the name. And that very moment, at the house of the pujari, जो मंदिर के पुजारी थे ना, उनके घर में खीर है. There is a bowl of that payasam in the house of the priest. The priest is sleeping. Suddenly, in the house of the priest, there is a noise. And when there is a noise, the priest wakes up and what he sees, that one small little kid is running away with the kheer in his hand. एक खीर का जो बाउल था उसे लेके कोई भाग गया. He can only see that much. He said in dark night, where to try to search for that? ठीक है, जो लेके गया. I'll see in the morning. He goes back to sleep. Within short span of time, this small little boy goes to that ascetic जो बैठ के रो रहा है. And he gives the bowl to him. And this ascetic is now, by looking at the bowl, he's starting to cry more. He said, oh my God, my
My error is so much that even the kheer has appeared in front of me. मैं कितना बड़ा गुनहगार हूं. Like how much bad I have done, oh my Lord. Please forgive me. Take it away. Take it away. You see, ये भक्त होता है कि भगवान की अनुकंपा भी वो सहन नहीं कर पाता कि क्या मेरी इतनी गलती हो गई कि वो मेरे सामने भी आके रख दिया. And then that boy says, don't worry. This is for you only. And what he says, I was sleeping in my home and then I saw a dream that Gopinath ji appeared in my dreams and he said that there is a person sitting at my temple crying, hungry. You take this bowl and give it to him. I cannot see my devotee sitting hungry throughout the night crying. और वो तब बड़े प्रेम से उसे ग्रहण करते हैं. And then what does this kid do? He says, okay, you sit here, you do your bhajan. Now I'm going. He takes the bowl, goes inside the temple, vanishes. And that next day morning, when the pujari comes, and what did he see? This ascetic is still sitting here, but now not crying in complete ecstasy. अब उसके दिए हुए खीर को खाओगे तो रोओगे क्या? Will you cry after eating the kheer that he has given you? He was in absolute ecstasy. Just by looking at it, the priest said, what has happened to you? And he narrates the story. He said, all this happened. I was thinking about the kheer. Then I started doing the penance. And in the middle of the night, one boy came with the bowl. And he gave me the kheer. And then he entered into the temple, but I have never seen him coming back. I don't know. And that very moment, the priest asked about the description of that kid. He said the same description as he saw in his house who was stealing the kheer. And that very moment, he lied in front of that person and he says, what devotion is yours? किस तरीके का तेरा भक्ति है कि तेरे एक छोटी सी इच्छा को पूरी करने के लिए वो चोरी करने को तैयार है. In order to just to fulfill one small little wish of yours, he is ready to steal from this day on. In order to remember you, he will be called as the stealer of kheer. इसीलिए उनका नाम खीर चोरा गोपीनाथ है. The one who stole the kheer. And you see, just for that small little desire of that devotee, for the entire history, he has taken the name that he is a thief. अब बताओ, ऐसे भगवान से प्रेम नहीं करोगे तो क्या करोगे? If you won't fall in love with someone like this, then what would you do? इसीलिए मैं पूछता हूं, like I keep on asking, how can I not love God? What was the topic? How to not love God. It is not the question mark. It was a statement. You know the difference? उसमें अगर क्वेश्चन मार्क होता तो इट इज ए क्वेश्चन, हाउ नॉट टू लव गॉड. ओके, टेल मी हाउ विल आई नॉट लव गॉड. नो, इट वाज नॉट ए क्वेश्चन मार्क, इट वाज ए स्टेटमेंट. हाउ नॉट टू लव गॉड, कैसे प्यार ना करूं उससे जब उसने सब कुछ दे रखा है मुझे. When he has given me everything, how can I not love God? And when I listen to all these beautiful happenings that has happened, आप जानते हो पुरी को स्वर्ग क्यों कहते हैं? Because of the sightings of Lord Jagannath and Krishna many times, just like Vrindavan.
पूरी धाम को भी मुक्ति का धाम कहा जाता है। ये माना जाता है कि वो स्वयं प्रचलमान है, मीन्स द लॉर्ड इटसेल्फ वॉक्स ऑन दैट प्लेन, on that earth. And then when I was thinking like how not to love God, then I said, let me count what all you have given me. Let me count what all you have given me. जब सब कुछ मुझसे मुक्त होना चाहता है, वो एक ही है जो मुझे अपने से जोड़ना चाहता है. When everything is trying to get away from me, see, all my relations, all my money, all my acquaintances, all the things that I have in this world, everything by default, it will go away, including the body that I have been polishing throughout the life. It will go away. The only thing that will never go away is that. जब सब कुछ, मैं क्या चाहता हूं कि मैं सबसे मुक्त हूं, नहीं, everything is getting away from me. You see, your breath is also going away from you. आपकी सांसें भी आपको छोड़ के चली जाती हैं, जो नहीं छोड़ता वो एक है. इसीलिए मैं कहता हूं, उससे प्रेम नहीं होगा तो किससे होगा. And then when I count, Sasiji, when I sit and count what all has happened to me, if you sit and count all that he has given to you, now tell me, what can exactly you give back? क्या नहीं है तेरा जो मैं तुझे दे सकूं? Yeah, all that I can give is, मैं अपने काम को राम में बदल दूं मेरे भक्ति के जरिए. I will convert that lust into love and transcend to you. देखो, कई बार कमलेंद्र जी, लोग पूछते हैं ना कि राधा का नाम कहीं लिखा नहीं गया, कहीं महाभारत में नहीं है, कोई पुराण में मेंशन नहीं है राधा का नाम. व्हाई देयर इज नो मेंशन ऑफ राधा's नेम इन द पुराणस? मैं उनको एक तमाचेदार आंसर देना चाहता हूं, राधा का नाम क्यों नहीं है वहां पे, और ये तमाचा पड़ना चाहिए उनके मुंह पे. I say you do things so that your name comes out. She does the thing so that her name never appears. आप कार्य इसलिए करते हो कि आपका नाम आए. उसने प्रेम इसलिए किया कि उसका नाम कहीं ना आए. Nowhere. I think इसलिए राधा का नाम कृष्ण से पहले आता है. चल पड़ा हूं गुमनामी के रास्ते पे मैं, चल पड़ा हूं गुमनामी के रास्ते में मैं, क्योंकि अब मुझे मेरे नाम से नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम से प्रेम है. Let there be no name of mine left. All that is left is you. क्या कहते हो कमलेंद्र जी, राधा का नाम क्यों मेंशन नहीं है? अरे, उसने अपने आप को कृष्ण में इस तरह भुला दिया कि उसका नाम रहा ही नहीं. और मैंने नहीं देखा इस तरीके का प्रेम. जिस तरीके से मीरा ने कृष्ण ने इस कदर प्रेम किया कि सदेह उसमें समाहित हो गई, उसका कोई अस्तित्व ही ना रहा. एक छोटा सा प्रसंग आया था, लाइक शिवा गुरु जी, देयर वाज ए स्मॉल लिटिल थिंग दैट आई सॉ व्हेन, व्हाट इज हिज नेम,
अ सेंट वाज, जो अंधे थे उनका नाम क्या था? कृष्ण का नाम लेते थे, नाम क्या था उनका? प्लीज हेल्प। सूरदास। सूरदास जी, like, like whenever he used to sing, Krishna comes to sit and listen from him. One fine day, Krishna says, "O Surdas, what if I give you your eyes?" कैसा हो मैं अगर तुम्हें आंखें दे दूं? और सूरदास कहते हैं, नहीं चाहिए मुझे ऐसी आंखें जिसमें संसार बसता हो, मेरी अंधी आंखों में तो सिर्फ और सिर्फ तू बसता है। I don't need those eyes in which the world will appear, because in my blindness all that appears is you. मुझे आंखें नहीं चाहिए। क्या करूंगा ऐसे आंखों का जिसमें संसार दिखे? भलाई तो उन्हीं आंखों में है जो अंधे होते हैं भी सिर्फ तुझे और तुझे देखते हैं। Now what could have happened to all these people? They all must have been mad to give away everything and just sit there, right? They must be utter, मीन्स मुझे तो लगता है साइकोलॉजिकल एनालिसिस सर ये करना चाहिए उन लोगों के ऊपर कि व्हाट हैपेंड टू यू, हाउ कैन यू बी सो मैड? द ओनली थिंग दे कैन आंसर दैट इज द वंस दोज हु हैव एक्सपीरियंस्ड इट। और जब एक बार उसको एक्सपीरियंस कर लेते हो ना, कभी बैठना, यू जस्ट सिट डाउन और टाइम एंड जस्ट count all that he has given you, and then you will realize, you see, लोग ये कहते हैं ना कि जब दुख आता है तब भगवान याद आता है। द मोमेंट यू हैव ए बैड टाइम यू रिमेंबर गॉड। गुड टाइम, गुड टाइम तो गुड टाइम है, गॉड क्या है? No, I'm not talking of you, I'm talking about the world. Haven't you seen that? Whenever there is a trouble, they will run towards God. When troubles go away, they run away from God, as if the God is the similar word of trouble। है ना, दोनों साथ में ही आते हैं ना। और भगवान भी नहीं चाहता कि आप उसे भूलो, इसलिए बार बार ट्रबल भेजता है। He does not want you to deviate from his name. So what will he do? He says, okay, so you only remember me when you are in trouble, right? Okay, so let me make sure you remember me. तो ऐसे लोगों के जीवन में क्या होता है? बार बार, लगातार। But what are you doing here? आप यहां बैठ के क्या कर रहे हो? क्या आपके जीवन में तकलीफ है इसलिए बैठे हो यहां पे? नहीं ना। So let me give you one statement. If you have given your time to him, अगर आपने अपना समय उसे दिया है, he will make sure he gives his time when you need it. जब आपने उसे अपना समय दिया है ना, वो ये देख लेगा कि जब आपको उसकी जरूरत है वो समय दे देगा। Who gave first? किसी ने मुझे पूछा, like, नीलिमा जी, somebody asked me, you always keep on saying that give, 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 give. I said, that's what I know. मैं वही बोल सकता हूं जो मैं हूं, because all that you know is take, 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 take. Then he says, then how should I understand that giving is really true art of living? I said, बहुत बढ़िया।
Have you seen the cloud? बादल को देखा है आपने? सर या when it rains, what does it do? बारिश जब गिरता है तो क्या होता है ना, इस उसके अंदर जितने बादल में जितनी पानी थी, द एंटायर वाटर दैट द क्लाउड हैज, इट गिव्स अवे. Just think of yourself as a small little cloud, okay? Whether you was a white cloud or a dark cloud, the cloud will burst. That's what I know. बादल बरसेगा. There are two analyses that I want to speak over here. One for the ones, those who are on the path of spirituality, and the other for those who are not on the path of spirituality. बरसना दोनों को ही है, छूट जाएगा दोनों के हाथ से. Anyways, it will go away. Let me tell you what is the better way. Have you seen in this rainy season, you must have seen black big clouds? Yes. You know, when I look at those big black clouds and when I see them, doesn't it look like all pumped up? All pumped up. बादल को देखो तो कैसा लगता है? पूरा फूला हुआ है. मैं भी कई सारे लोगों को देखता हूं, वो भी फूले हुए हैं. They are also all pumped up. No, not in their body figure. I'm not talking about that. In their ego. In their ego, they are all inflated. And when I look at that black cloud, I see like the same thing. ये काला बादल है. क्यों इतना फूला हुआ है? क्योंकि अंदर बहुत भरा हुआ है. Ego. It's all inflated. So I am the cloud. बट क्या होता है जानते हो? एक छोटा सा बादल कहीं से आता है. It's a big black cloud. A small little cloud happily floats, comes towards it and hits it. What happens? You know what happens after that? It rains. जो था सब बह गया. कहां गया काला बादल? उसी भांति. In your entirety of life that you call as 70, 80, 100 years of life, I see those people inflated. Then a small speck of a second, छोटा सा बादल, it's a huge one. काला बादल जो है, it's a huge one. Your life is 70, 80, 100 years, whatever your life is. In that, एक छोटा सा बादल आएगा. क्या है वो बादल? Death. Whether you like it or not, it is dancing and coming towards you. It is all happy. It's not worried. वो हंसते खेलते आपके तरफ ही आ रहा है. कितना मोमेंट का होगा? क्षण भर का होगा. It will be a momentary activity. Your 80, 90, 100 years versus a speck of death is a small little cloud. लेकिन धीरे से आएगा. और what will happen? सारा पानी बह जाएगा. सारी अकड़ निकल जाएगी. सब कुछ जो पकड़ के बैठे थे सब गया. Everything washes away. So that is the story of the black cloud. Let me tell you the story of the white cloud. Now you decide what cloud you are. But if you are sitting here, I absolutely understand you are not that. Then somebody says, like Rani is sitting there and say, no, I think like I'm a gray cloud. Neither black, neither white. I am in between, balancing. Okay. Good balance. What the white cloud? White cloud वो है जो बरस जाता है. When it rains, Vijay ji, that's what I'm saying, कि देना कैसा होना चाहिए. When you give yourself entirely. Then what happens? जब वो बादल अपने अंदर जो पानी है दे देता है ना, the water that it is consuming, when it gives away, then again the sun shines.
and evaporation happens, and it not only collects the water from where it was fallen, it collects from across the creation and brings it back to its form. जिसने देना सीखा उसके लिए यूनिवर्स हर जगह से लाके भर देगा. You will not just be that small little cloud anymore. The universe will ensure like you are filled from the waters of the 7 oceans. And that's why I say कि if somebody is ready to, अगर मैं उसके ऊपर एक जल, मुट्ठी भर जल उसके ऊपर चढ़ाता हूं, या उंगली लाइक आंजुली भर जल उसके ऊपर चढ़ाता हूं, या तो एक स्पून में लेके जल उसके ऊपर चढ़ाता हूं, he is ready to take care the entire weight of my life. Whom can you love more? लेकिन कभी कभी ना मैं धवल जी कभी कभी उससे बात करता हूँ, कभी कभी हमेशा वही से ही बात करता हूँ, अभी भी उसी से ही कर रहा हूँ. मैं उसको बोलता हूँ ना तेरे को थोड़ा एक आइडिया देना है. See, at times I also become intelligent, right? मैं तेरे को एक आइडिया देना चाहता हूँ. What idea do you want to give? I say, you see, like people are forgetting what you are giving. Then he said, what should I do? I said, consult. Should consult someone, right? Yeah, God needs consultation, and I am the consultant. So I said, okay, I'll give you a suggestion. Do one thing. Whenever you are giving something to them, add a 1 kg weight on their head. उनके सर के ऊपर 1 किलो का वेट रख दे, ताकि कुछ दिनों के बाद पता चले कि तूने कितना दिया है, उसके नीचे दब जाए. So that they will remember what all you have given and they should drown under that weight. तब पता चलेगा कि तूने क्या दिया है. नहीं तू तो हल्का फुल्का कर देता है. You don't keep any weight after giving. That's why they are floating. कभी इधर कभी उधर. Put a weight on their head ना. सोचो what I said if that is done to you. From your childhood, when you didn't had an idea who you are, everything was given to you. Let's say on that day he put 1 kg weight on your head. He said, you don't know anything, but I'm taking care of you. Lay. This should be a reminder. आपके सर के ऊपर बैलेंस करना मुश्किल होता है, गले में डालता हूं 1-1 किलो का. The very next day, oh, today also I have taken care of you. Another kg weight. Now calculate what weight would you have been carrying if you just calculate every day. अरे दिन छोड़ दो, साल भर के भी अगर 1 किलो ऐड करे ना, अब भी चल नहीं पाओगे. उठा के चल लोगे 70 किलो अपने गले में? नहीं ना. फिर दिन, महीने, साल या तो क्षण. When he has given you so much, the only thing is वो आपके ऊपर जो देता है उसका भार नहीं रखता, इसलिए आपको पता नहीं चलता. He does not keep a weight on what he has given. That's why you don't know what he has done to you. विजय जी सोचो, इतने साल तो गए गए, अब से भी अगर डालना शुरू करा उसने, तब भी मुश्किल हो जाएगी. It will still be difficult. Yes or yes? So why can't you love someone who has given you everything, yet never has kept a weight on your head? क्या कहोगे उसे? Now tell me, have you met anyone who has done such things to you? कोई भी. जिसने आपको 2 अच्छे शब्द बोल दिए, आपको उनसे प्रेम हो जाता है. किसी ने आपको देख के मुस्कुरा दिया, आप उनसे प्रेम कर बैठते हो. किसी ने आपको कुछ दे दिया, आप उनसे प्रेम कर बैठते हो. तो इससे प्रेम कैसे नहीं करोगे? How will you not? Now कभी समय लेना है. Take some time, sit and just think of what all I'm saying. Just sit there and just think of all that he has given.
देन यू एट टाइम्स लोग कहते हैं फिर उसने बुरा समय भी तो दिया। मैंने कहा अगर आग ना होती तो खाना ना पकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? They ask me why. No, no, he has also given me some bad times. I say, okay, if there was no fire, you could not have cooked the food. आग भी जरूरी है। उसी तरीके से उस आग ने तुम्हें जला दिया या बना दिया, ये देखो। If that fire, if that problem what he has given you, has it made you or has it broken you? But देखो जाके and sit down with all your pains and all your gains. Sit down and I will still can guarantee you he has always given more than what he has taken away. He has always given more happiness than the sadness that I have stuck to. He has always taken care of me more than even I have ever thought about him. मैंने उसके बारे में उतना बार सोचा भी नहीं होगा जितनी बार उसने मेरे बिना बुलाए ही मेरा ख्याल रख दिया है। How long do you remember it throughout the day? कितना समय याद करते हो? और सोचो अगर उसने आपको याद करना बंद कर दिया तब? Now you are realizing, अरे रे 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 रे, gone case. And that's how it is. Even if I think of it for a moment, I realize the entirety of my life, he has been thinking of me. And he is thinking of me. That's why. You remember the plate of rice on your table? That single speck of rice. You will need it today. For that reason, he has made the arrangements years ago. The water that you have in the bottle, you will need it today. For that, he has planned for it millions of years ago. Now tell me, क्या उसने आपको भूला है? Has he forgotten you? और जो आपको कभी नहीं भूलता, क्या आप उसे भुला दोगे? Will you forget? And then the write-up. People say, oh, you have become famous. And I laugh. I said, how do you say so? No. People listen to you. I said, oh, really? They listen to me? Okay, good. If they listen to me, then let me tell you how I became this. Because nobody knew me. Nobody literally knew me. And when I will vanish in this world, how long will they remember me? So, the name that came from him. The name that will vanish in him. So, who and what I am to take the credit for? राम भी आए चले गए, हम भी आए हैं चले जाएंगे. But the thing is, it's not about how you came and how you went. All that matters is how were you when you were here. तो धवल जी, हमारा लिखा हुआ गाना जो आता है, मुझे कौन जानता था तेरी रहमतों से पहले. मुझे कौन जानता था तेरी रहमतों से पहले. मैं तो भटक रहा था तेरी रोशनी से पहले. Who knew me until I got your grace? I was just roaming in darkness until I saw your light. मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन जानता था.
तेरी रहमतों से पहले। मैं तो भटक रहा था, I was just roaming. And the song goes, मुझे कौन जानता था तेरी रहमतों से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी रहमतों से पहले, मैं तो भटक रहा था तेरी रोशनी से पहले, मुझे कौन जानता था। बिन मोल में बिका था सड़कों और गलियों में, बिन मोल में बिका था सड़कों और गलियों में, मुझे तख्त मिल गई है, मुझे तख्त मिल गई है तेरी रहमतों के बदले। I was just being selling myself in the lanes and the by lanes to the cheap sellers and the cheap buyers. But you gave me the crown. मुझे तख्त मिल गई है means you have given me the simhasana. Who else could have done that? तेरी रहमतों से पहले. Who knew me without your grace? I was just being sold out at a valueless price, and I became priceless through your grace. And the one who has picked me up from that space and gave his name, whom should I not love? And then मैं तो गुजर रहा था जीवन के रेगिस्तान में, मैं तो गुजर रहा था जीवन के रेगिस्तान में, मुझे गुलशन मिल गई है, मुझे गुलशन मिल गई है तेरी रहमतों के बदले. I was roaming in the deserted paths. I was roaming in the deserts. मुझे गुलशन मिल गई है. You bestowed me with a garden. तेरी रहमतों के बदले. I got a garden by your grace. And then it comes like, तन्हा मैं लुट चुका था तन मन और धन से, तन्हा मैं लुट चुका था तन मन और धन से, मुझे मुझसे ही मिलाया, मुझे मुझसे ही मिलाया तेरी रहमतों के बदले, मुझे कौन जानता था तेरी रहमतों के बदले. Means I was devastated from all aspects of life. Tan, man aur dhan se, from this body, from this mind, and from the wealth, I was ruined from everything. And then you made me realize who I truly am. You made me meet my own self. And that was your grace. मुझे मुझसे ही मिलाया तेरी रहमतों के बदले, मुझे कौन जानता था. And the final lines. हो सा गया था मैं भी दुनिया के झमेलों में, हो सा गया था मैं भी दुनिया के झमेलों में,
मुझे घर का पता बताया, मुझे घर का पता बताया, तेरी रहमतों के बदले मुझे कौन जानता था, तेरी रहमतों के बदले. When I was lost in this world, when I have forgotten my path, when I didn't even know where to walk, when I was given up, when I said, I don't know my path back to home, that moment you showed your grace. You gave me the address of my home. And if I don't love you, then whom should I? Because when everyone is expecting something from you, he is waiting for you. And I believe if you cannot fall in love with it, then with whom? How not to love God when he has done all this for us? There are so many beautiful stories to tell. But now I will tell you the final one, a small little story, rather history. And after that, we will do the Chidambaram Rahasya. From another aspect of it, when the heart has been cleansed and the soul is flying high, and when you are realizing that how beautiful this connection is, now I know how to make him speak. And when I was saying about that, जब आपके लड्डू गोपाल आपसे बात नहीं करते, when that small little deity of yours is not speaking to you, you should speak to him. You should teach him how to speak. Similarly, why not the same thing with all the other gods? I say you start speaking to them. They don't know how to speak. Teach them how to speak. And then you will realize the magic happening in your home. You don't have to run away anywhere. It will speak in your heart. वो आपके हृदय में बस के बात करेगा. और बस के क्या कमलेंद्र जी, आपके हृदय में घुस के बात करेगा. और मैं तो यही चाहता हूं कि वो घुस जाए. बसने वाली बात पुरानी हो गई, अब तो घुस के बात करे. Now I come to a story of a person named as Dasia Bauri. His name was Dasia. Bauri is what you call is a क्या कहते हैं, वर्ण है वो. Like you call it like you come into, जैसे बोलते हो normal caste, scheduled tribe and all those things. शूद्र जिसे कहते हो. So Bauri का मतलब होता है शूद्र. At that time, that was prevalent, right? Very, very prevalent at that time. And you see, all these people actually broke those prevalent prathas. Bhakt Bhagwan se bada kaise ho gaya? He was a Shudra. But he loved Lord Jagannath like anything. Every day since his childhood, he would come. But as he is not allowed to enter into the temple, he would stand far off from the temple and look at the God, at the temple, and just pray. Intense love, immense love. And when he used to be there and he just looks at the temple, he could not stop his tears. He just said, "Kisi din darshan to karaoge." He waits from a year to year, just that when the God appears on the chariot, he would see. But that one glimpse of it is not enough for that devotee. He says, "Why have you made me like this? When everyone is able to reach out to you every single day, why have you made me this, that I have to wait to see you for a year? एक साल इंतजार करना पड़ता है मुझे तेरे दर्शन के लिए." But at the same time, I don't have any complaints. I will wait not for just years.
but I will wait for eons to see you again. And then it goes like this. One fine day, the chariot was started, and Dasya was far off to reach Puri. And then when he was trying to reach out, he could not. He knew that the chariot will be run away, and by the time he reaches, it would have been completed. And then he calls out the name of the Lord. He calls out the name of the Lord and says, I have waited for you. I have waited for you a year long. Will you wait for me for some time? And history is evident. The chariot stopped in the mid of the road. रथ वहीं का वहीं रुक गया. No one is able to identify what has happened, why the chariot is not moving. उन्हें क्या पता कि किसी ने उसको एक दुहाई दे दी है कि मैं तेरे लिए साल भर इंतजार कर रहा था, क्या तू मेरा इंतजार कुछ देर के लिए करेगा? And the answer was evident to the world. The chariot stopped and did not move until he came. जब तक वो आके पहुंच नहीं गया, तब तक वो रथ हिला नहीं. Then let me tell you one of my secrets. Shiva Guruji, some people ask me, like, despite all the things that you do, how do you manage it? And I'm sharing a secret, okay? You can use it. How do you manage it that you are always on time? Whatever happens in your life, but you are still here smiling, right? How do you do that? And my secret, बताना नहीं किसी को, है अपने लिए कार्यरत करते हैं. It should be only for those people those are sitting here. I have declared something. You know what is my declaration? Let's say it's a Wednesday and I have to start the session, Q&A session. And I have said that I will do the Q&A session. I have not said I am not doing, ऐसा नहीं कहा. I have said that I will do the Q&A session. And then I know I might not reach on time. You know what I say? I simply say one thing. You try to reach by 8:30, right? आप लोगों ने अगर कुछ टाइम कमिट किया, you try to reach at that time. You know what I do? You see the drastic change in this. I say 8:30 तब तक नहीं बजेंगे जब तक मैं नहीं बैठ जाता. It will not become 8:30 until I sit on the chair. अब बताओ, आपका रास्ता क्या, मेरा रास्ता क्या? आप भागते हो, मैं भगाता हूं. I said, if you have given me this responsibility, make sure I reach. It's not my job. It's your job. और जब तक मैं कुर्सी पे ना बैठूं 8:30 नहीं बजेंगे. You have to stop the sun, you stop it. You have to stop the moon, you stop it. You want to stop the movement of the planets, you stop it. But until I sit, 8:30 नहीं बजेंगे. How are you going to live? See, a small little speck, छोटा सा कोई है जो ये कह रहा है कि मैं भाग भाग के पहुंच जाऊं, भाग भाग के पहुंच जाऊं. नहीं पहुंच पाओगे. So what do you say? You channelize the same energy into the bigger consciousness. Now you say, it's not my responsibility to reach on time. Now it's yours.
जब मैं पहुंचू तभी घड़ी में 8:30 बजे. एंड दैट्स हाउ आई लिव. देर इज ए स्टोरी ऑफ समवन, सुधा जी, जिसे कहते हैं कि वो एक सती थी. शी वॉज ए पतिव्रता नारी है. एक बार हिज husband was beaten by one particular animal or a reptile that is called as कालकूट. कालकूट अगर काट लेता है तो यह कहा जाता है कि वो रात होते होते चला जाएगा, उसकी मृत्यु निश्चित है, उसमें इतना जहर रहता है. बट इफ somebody is able to survive more than that hours, means 12 घंटे से ज्यादा, if somebody survives means 12 घंटे के अंदर कैसे भी रात हो जाएगी. If somebody survives 12 into 5, if somebody survives, then his poison will be destroyed by the toxins that is, the fighting mechanism that is there in the body. मतलब उतने घंटे तक अगर वो रात नहीं हुआ, because the moment night comes, it poisonous effect grows. आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब जैसे रात होते ही आपको नींद आती है ना, वैसे ही. So similarly, it has that kind of effect. When it becomes dark, it has a more darker effect. Then she goes to the Guru, and the Guru says, then take a prana. That if this night is there, it has to happen. It should not happen. Sorry, it is, if the, just a second, it is not about the night, it is about the day. It said, if the day does not happen, वो दिन में काम करता है actually. So दिन, if he is not able to resist it throughout the night, if the day appears, he will die. And if 7 nights he is alive without day, then he will survive. Then this Guru says, you do one thing, you take the prana. And it is said, वो कहती है कि एक राति हो शपथ राति, means one night, may this one night become as long as 7 nights. This one night becomes as long as 7 nights. And it happened. Now you say, दासिया बावरी की कहानी बहुत अच्छी है कि उसने कहा कि मैं तेरा इंतजार साल भर करता हूं, क्या तू मेरा इंतजार थोड़ी देर कर लेगा. Good story, right? But how many of you have experienced that you had some work and the session had to start at a certain time, but it did not? I was ready, Hari Bhai was ready, all other people are ready, but the session did not start. Technical issue, करंट चला गया, इंटरनेट उड़ गया, मैं बात कर रहा हूं, मेरा माइक बात काम नहीं कर रहा है. How many of you have experienced that? And let me tell you, that moment you became the Dasya Vauri. You said, until I reach, the session won't start. Until I sit, 8:30 won't happen. 8:30 नहीं होंगे. तो क्या कहते हो? Let me ask you a tough question. जैसे मैंने कहा है कि जब तक मैं नहीं बैठता 8:30 नहीं बजेंगे, क्या आप ये कह सकते हो कि जब तक मेरी मुक्ति सुनिश्चित नहीं हो जाती मैं प्राण नहीं त्यागूंगी? I'm not going to live until you assure me that. You assure that I am free from these worldly things, I'm not going to come back, I will leave the body. Until then, I will keep on breathing. Even if you try to take away, I will not give it away. I will still try to breathe. I will fight with you until you assure me that I am free from this world now. रोक सके तो रोक के बता. If you can stop my breath, stop it. Now I fight with you. ये कहते हैं भगवान से प्रेम, जिससे लड़ सको. अब जानते हो ना, जब राधा जाके बैठ जाती थी किस पे?
वो एक स्विंग के ऊपर, राइट? Then she would sit like a queen and then she would say, "Oh Krishna, now you push. झुलाओ मुझे, मैं झूले पे हूं, तुम अब मुझे झुलाओ." क्या राधा को नहीं पता था कृष्ण कौन है? और कृष्ण क्या करता था? हाँ हाँ, राधे राधे, तुम हमारी राधे, हम तुम्हारे दास, तुम बैठो, हम झुलाते हैं आपको। क्यों करते थे ऐसे? यू सी, द लव has become so amazing that it has become playful. It has become so playful that they can fight. वो हक जताना कहते हो ना आप? You say, no, no, I have this right on you. हाँ, वैसा दुनिया के ऊपर हक जताते फिरते हो, उसके ऊपर क्यों नहीं? I say, ठीक है, you have done all these things for me. Now what I'm saying is eye opener, okay? बड़े ध्यान से सुनो इसे. If you have thought so much about me, कुछ तो काम होगा. Where would you invest money? Huh? You wouldn't just throw away money, right? So you take care of all those things. Wherever you are investing, wherever you are doing a transaction, you will be sane enough to transact at the right place. And I apply the same rule with him. I said, I see my life. It is so amazing. You have given me this, that. क्या चाहिए? What do you need from me? अब बताओ. कृष्ण दास बन गया. Hello. Did you saw how I love him? तब मैं कहता हूं, अच्छा काम है ना, अब थोड़ा झूला झूला, मैं बैठा हूं, अब झूला. कह सकते हो आप? Can you even think to make your God do that? नहीं कर पाते क्योंकि हमने हक जताना सीखा ही नहीं. We have not known that art of loving. मैं कहता हूं, मेरा प्रेम कोई हद नहीं जानता क्योंकि मेरा प्रेम तेरे लिए बेहद है. My love knows no boundaries because it is boundless when it comes to you. मेरी कोई हद नहीं है, मैं बेहद हूं. And that's where when I speak like this. And when I speak like this, and that's where when I speak like this, you also love it. You know why? Deep down within you, you also want to experience the same thing where you are not having a one-sided love story. They're thinking, अरे मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, वो सुन रहा है क्या? And then you put on that. जैसे सुधा जी ने रखा होगा, सच में सुन रही है क्या? And then you see, वो भी ऐसे देखता है, मैं तुझे इतना सब कुछ देने के बाद भी तू मेरे ऊपर डाउट कर रहा है. नहीं नहीं, डाउट नहीं कर रहा हूं, फिर से प्रूव कर बोल रहा हूं. इज दैट रॉन्ग? इट्स जस्ट लाइक दिस. मैं भी तर्क करता हूं उससे. सौम्य जी, आई आस्क हिम दैट लेट्स से यू गेव मी अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन and I say, no, I know the mathematical calculation. Will you agree? No, you say prove that. And when I prove that, you will know that I know. So मैं भी वही करता हूं. चलो अच्छा, सब कुछ तूने दिया है ना, अप्रूव कर. I know you have given me, I don't deny that. लेकिन can you see when Radha and Krishna are fighting, when Radha and Krishna are dancing, when Radha, कभी राधा को गुस्सा आ जाता है तो कभी कृष्ण गुस्से में चले जाते हैं. What is that? That is called as Leela, the favorite pastime of gods. You know ये लीला क्यों होती है? I'll tell you why you people fight. Might be at a minute level.
it is coming from a higher realm, but if you understand that, might be you will be able to really elevate that small little thing into a higher realm. राधा कृष्ण से इतनी दूर चली जाती है ताकि जब बहुत देर के बाद सामने आए ना, तो उसका प्रेम अनेक गुना हो जाए. Krishna is going away from Radha, or Radha is going away from the Krishna for certain time, so that the moment he appears again, the love will have no boundaries. है ना? Are you understanding this? कि आप किसी से इतना प्रेम करते हो और वो दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, अचानक आपके सामने आ जाए, then you do like this, right? होता है ना? Then let me tell you the secret. Why did I share this? Because Radha wanted Krishna to have more love towards her, she went away. She disappeared, she vanished. And then she appears again. Right? हार्ट को संभाल के रखो, अब जो बोलने वाला. Why is your God hiding? Huh? Radha hides so that when it comes again, Krishna will have ecstatic love about it. Why is your God hiding? गया कुछ समझ में, कुछ भी आया नहीं आया ना, तो एलिवेट करो अपने आप को. वो इसलिए नहीं छुपा कि वो आपसे गुस्से में है, वो आपको दिखाई नहीं देना चाहता. वो आपसे इसलिए छुपा है कि जिस दिन आपके सामने आएगा, आप अपने आप को भूल जाओगे. ये है हमारा रास्ता. आपका रास्ता क्या कहता है? आप पापी हो, आप दुखी आत्मा हो, आप भटके हुए आत्मा हो, इसीलिए भगवान नहीं दिखता. हम कहते हैं हमारा भगवान रुष्ट नहीं है, छुपा हुआ है. क्यों छुपा हुआ है? क्योंकि वो हमारे साथ खेल रहा है. क्यों खेल रहा है? क्योंकि वो मुझे संपूर्णता से अपने अंदर समाहित करना चाहता है. He wants to give me the experience of life. वो क्या कहता है? जब जीवन भर ढूंढ ले, जो जो चीजें तू करना है ना जीवन में, वो सारे चीजें कर ले, सारी खुशी ढूंढ ले. लास्ट में जिस दिन मुझे देखेगा ना, वो सब एक तरफ और मैं एक तरफ. अब बताओ जीवन कैसा है आपका? And I say, go into the world, experience all the things, enjoy. Take an ice cream, eat it. Take a chocolate, bite it. Run, dance, get wet in the rain. All that you do. Earn money, become rich. But remember one thing, just like you cannot take away that wetness from water and the heat from the fire, you cannot take away the God from your own self. चाहे मानो या ना मानो. जैसे पानी से उसकी गीलापन और अग्नि से उसका आग को अलग नहीं किया जा सकता, उसी भांति आपसे आपके ईश्वर को भी अलग नहीं किया जा सकता. आप चाहे कुछ भी मानो, आपके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. And when you realize this part, that wow, that is my intrinsic quality, yes. So whenever, whatever, whichever thing you do, how will it be? जब आपको पता ही है कि all that is me is he or she, and how will I do my things? How would you do things? How would you live your life? He has not sent me into the world to get lost. He is just playing hide and seek with me. This time he is hiding. I am seeking. And the maze
has been created to create the drama so that you can enjoy. The problems that you face is might be the dead end, but there is another way to go. And that's how I understood how to love it. And you know what happened? The more and more I loved him, the more and more I loved myself. And then I realized he is not hiding anywhere else but within me as me. वो कहीं और नहीं छुपा है, मैं बन के मुझ में बैठा है. He's just sitting here. So now you understood the entire drama that's going on and how you have to deal it. क्यों भूल जाते हो, क्यों याद आ जाता है, जीवन में भगवान क्यों नहीं दिखाई देता है, भगवान से कैसे बात करवाना चाहिए, भगवान अगर बात नहीं कर रहा है तो कैसे बात करना चाहिए. सिखाओ उसे. अगर आपका भगवान आपके घर में नहीं घूमता है ना, सो डू वन थिंग, उसका हाथ पकड़ के चलाना सिखाओ. इट विल वॉक. आप बोलोगे कैसे? हाथ में लो, उसको नीचे रखो, बोलो चल. If it does not walk, hold its hand and pull it. अब चल. Then you say, this is utter madness, ना? मैं बोला वो उसी से मिलता है और उसी को मिलता है. The path of madness. Why the path of madness? Because you have not seen something and you have fallen in love with it and you want to give everything away. That's madness. And that's where I say, create that madness. Who stops you? Your mind. और जैसे रावण ने कहा, रावण को ज्ञान नहीं, ज्ञान से मुक्ति चाहिए. और हम क्या कर रहे हैं? हम बोले आप भी तो ज्ञान ही दे रहे हो. हाँ, कंट केव नहीं न कंट केव. कांटे को कांटे से निकालो, बुद्धि को बुद्धि से, तर्क को तर्क से, प्रेम को प्रेम से, ज्ञान को ज्ञान से. So now I feel, after listening to all this, now the Chidambaram Rahasya will do the magic. Because what is the Rahasya? That it is and it is not. वहां कुछ भी नहीं है. And recently, some people went there. And they also saw the same thing. क्योंकि वो जो है वहां पे, there is nothing, actually there is a curtain. If you remove the curtain, there is nothing. Okay, that's what the rahasya is. That's what the veil is. The veil creates an illusion that there is something. And when you remove it, there is nothing. What does that mean? It says it is not just limited to one thing. वो सर्वव्याप है. It is everywhere. Why are you only waiting for the curtain to be raised? It is everywhere. So let us experience that then. So in order to experience that, I need help. हरि भाई, सच में हरि भाई, इसे आई ओपनिंग सेशन ही कहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सोए थे, अब जाग गए हैं. रात से सुबह हो गई. So now we'll do the Chidambaram Rahasya. And when you do that, do it. उसके हक से करो उसको. No, I'm not telling anything now. It is another kind of mad God. He keeps on saying, ये नहीं बोला, ये भी नहीं बोला,
तूने मेरे बारे में ये नहीं बोला? है ना, इसे खुद बोलना। Why only you want me to speak? Why don't you go inside them and speak? And then they say, चला तो जाऊंगा, बोल तो दूंगा, सुनेंगे क्या? I will go, I will speak. Will they listen? Because there is a lot of noise, and in that noise, my voice simply vanishes. And that's why I take your voice to speak. You have a good one. And I said, अच्छा, वॉइस इसलिए दिया ताकि तेरा काम कर सकूं। हाँ? और तेरा काम करते करते तेरा नाम कर सकूं। कमाल का है तू। अजीब जादूगरी है तेरी। हाँ, नवनीत जी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अजीब जादूगरी है तेरी, तू मुझे बिना बोले सब कुछ करवा लेता है। So what a magic you have that without even telling me you are making me do everything. अजीब जादूगरी है। और इसी जादूगरी को कंटिन्यू करते हैं। लेट अस कंटिन्यू हिज मैजिक इन दिस वे, अ मैजिक वेयर वी ऑल सबमर्ज इनटू that river which is trying to reach out to the ocean, the river that is trying to reach out. Why? याद है ना विद्या जी? नदी समंदर के तरफ इसलिए भागती है क्योंकि ये भी पानी है, वो भी पानी है। और अब हम उसके तरफ क्यों भागे? क्योंकि ये भी पानी है, वो भी पानी है। अब ये पानी पानी के चक्कर में आभा जी कुछ पा लें तो अच्छी बात है ना। सो हु इज गोइंग टू चैंट 55, सॉरी 51 into 5, 51 बार 5 हाथ उठने चाहिए। सो जनेश जी, अलीवा जी, थैंक यू। सो 2 आर रेडी। 3 more, 3 more, 3 more, 3 more, 3 more। अब इसके लिए भी मोटिवेशन चाहिए। हे भगवान, तुम और तुम्हारे भक्त दोनों एक ही जैसे हैं। एक सुनता नहीं, एक दिखता नहीं, और हम यहाँ बैठ के बीच में ताली बजाते रहते हैं। मैं भी तेरे जैसा ही हूँ। जब तक 8:30 नहीं बजेंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा, और जब तक मैं नहीं आऊंगा 8:30 नहीं बजेंगे। बोथ वेज। तब तक चिदम्बरम रहस्य नहीं होगा जब तक 5 हाथ नहीं उठते। जब तक 5 हाथ नहीं उठते तब तक चिदम्बरम रहस्य नहीं होगा। वाह, क्या मोटिवेशन है। वन मोर। मतलब क्या लगता क्या है कि आप गलत बोल दोगे या आपका सुर खराब है? कोई डरो मत। जैसे मैंने कहा ना, अंधों के राज्य में काना राजा, मैं जैसा सबसे लीड रोल में सिंगर था, वही अरे हो गए हाथ। चलो मोटिवेशन वर्क। तो अब होगा चिदम्बरम रहस्य। सो ऑल ऑफ यू प्लीज सेटल डाउन नाउ। अब सब कितने प्यार से देखो। जिस लोगों ने हाथ उठाए उनको देखो, और जो लोग हाथ नहीं उठाए उनको लोग देखो। ये जितने हाथ नहीं उठाए ऐसे बोले, ओहो बच गए। कितने दिन बचोगे? एक हाथ गायब हो गया। कितने दिन बचोगे? यही बचने के चक्कर में तो मरे जा रहे हो। बचना छोड़ दो, मुक्त हो जाओगे। चलो।
So we will catch hold of Alivaji again by the time she returns back. I think like her hand went down. So सिर्फ अभी 4 हैं, लेकिन शुरुआत कर देते हैं. So जनेश जी, so we have Alivaji back. जनेश जी प्लीज स्टार्ट. मंत्र तो याद होगा ही या बोलना पड़ेगा? शिवा शिवा. सॉरी गुरुजी, उसका टोन बहुत सुंदर भूल बात. गया. जनेश जी एक सुंदर चीज याद दिला दी आपने. एक दिन पहले की बात है, वो जस्ट डे बिफोर यस्टरडे, not day before yesterday, it was on Wednesday Q&A session. हाँ, Q&A session got ended early this time. Imon came and he said, you ended the session today early? I said yes. Now I have a question. Said, what's your question now? वो सेशन हो गया, तुम्हारा सेशन खत्म नहीं हुआ. बोला I have a question that whenever we go to God or a guru, whenever we go in front of them, we forget the question. Why is it so? ऐसा क्यों? मैं बोला तू क्यों पूछ रहा है? तो हंस रहा है, ऐसे बोल रहा है, I had a question, I also forgot. अच्छा, so then, now that's why I'm asking this question, why I forget? And it must be happening with many people, na? I said yes. So जनेश जी एक मिनट के बाद मैं आपको फिर बोलूंगा, क्योंकि there is a beautiful learning from that. वो मुझे कहता है कि क्योंकि मैं सवाल भूल गया इसीलिए पूछ रहा हूं क्यों भूल गया. And this must be happening with many people. I said yes, this exactly happens. People come with a list of questions, when they sit in front of me they forget. तो फिर ऐसा क्यों होता है? Can you tell me that also? I said absolutely, I'll give you a very beautiful answer. I said sit down. बैठा. मैंने कहा कि देख, when you are sitting in a dark room, एक अंधेरे घर में आप बैठे हो और आपने दिया जलाया, you lighted up a candle and that candle is enough to light up the darkness there. आपके घर का जो अंधेरा था, एक छोटे से दिया जलाए और पूरा घर उजाला हो गया. That small little diya is the question. Why? Because you are in a situation and you are trying to find a solution. How to find a solution? The first, there should be a question. So what is the question there? The question is the candle. जलता हुआ दिया. बोला हाँ, अब आगे क्यों भूल जाता हूं? अगर सवाल है तो भूल क्यों जाता हूं? बोला because you are sitting in a dark room, all the light you can see is the light of the candle. Then what do? You open the door and you see the sun. But you open the door and you see the sun, what happens to the candle? सूरज के सामने तुम दिया लेके आ गए, क्या हुआ दिए का? दिया जल रहा है, अस्तित्व नहीं रहा उसका. उसी भांति जब तू मेरे सामने आया, you saw that it knows. And when I was thinking that small little candle is the entirety of the light that I have, when I saw you, I realized that there is something much bigger than that. And this small little question disappears. What happens to you all? कुछ ऐसा ही होता होगा, भूल जाते होंगे. अब वैसे ही जनेश जी के प्यारी सी बातें सुन के हमको ये याद आया कि लोग भूल जाते हैं. So who remembers? अलीवा जी तो बोलना भी शुरू कर दिए. किसको याद है? सुधा जी से शुरू करते हैं. चलिए सुधा जी. प्रणाम गुरुदेव. 51 टाइम्स. हाँ, राधे राधे. हर हर महादेव. राधे राधे. देखो, हम राधे राधे कहते तो लोग हर हर महादेव कहते हैं, क्योंकि जो राधा वही शिव, जो शिव वही राधा, जो काली वही कृष्ण, जो कृष्ण वही काली. चलो सुधा जी, प्लीज गो हेड. सो एवरीवन सेटल डाउन, क्लोज योर आईज. यू रिमेंबर 5 पॉइंट याद है कि 5 हफ्ते के बाद भूल चुके हो?
अब देखो सब लोग देख रहे, टिंग टिंग टिंग, इट्स आईज आर रोटेटिंग राउंड एंड राउंड. व्हाट वाज द टेक्निक? अरे टेक्निक कुछ नहीं है. द फर्स्ट 51 हियर, द सेकंड 51 हियर, द थर्ड 51 एट योर लेफ्ट नी, द फोर्थ 51 इन एट योर राइट नी, the rest on the right shoulder 51 times, then the heart 51 times. But we have only 5 people, so we will stick to the right shoulder only. So the 5-star mantra. Okay, 51 times. You have to focus first on the head, the top of the head, second on the left shoulder, third on the left knee, fourth on the right knee, fifth on the right shoulder. समझ में आ गया? रिवाइज हो गया. अब समझ में आता है कि सीरियल वाले रिप्ले क्यों दिखाते हैं. Okay. चलो, लेट्स स्टार्ट. सुधा जी प्लीज. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. ओम नमः शिवाय. हर हर शिव शिव सदा शिवम. थैंक यू सुधा जी. नाउ एवरीवन फोकसेस ऑन द लेफ्ट शोल्डर. बाएं कंधे के ऊपर ध्यान देते हुए. गणेश जी प्लीज अनम्यूट.
ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिव। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवा। Now, Dhavalji, please unmute. Pranam. Am I audible? Yes, please continue. Now the focus on the left knee. Om Namah Shivaya. Har Har Shiv Shiv Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiv Shiv Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiv Shiv Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiv Shiv Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiv Shiv Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiv Shiv Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiv Shiv Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiv Shiv Sada Shivam.
ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय हर हर शिव शिव सदा शिवम। थैंक यू धवल जी। अलीवा जी, नाउ फोकस नमस्कार महादेव। राइट नी, प्लीज गो हेड। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय।
हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। And now, Deepika ji, please go ahead. ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम
ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। ओम नमः शिवाय। हर हर शिव शिव सदा शिवम। थैंक यू दीपिका जी। हरि भाई। Yes, Manasu. Yeah. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Om Namah Shivaya. Har Har Shiva Shiva Sada Shivam. Thank you, Manoj. So just sit there for some time. Just take 2 minutes वहीं. Just absorb everything that is there, that energy that you are feeling right now.
Just absorb everything, and then with a smile on your face, welcome back to the world. So thank you everyone for joining How Not to Love God and ultimately loving Him again more. So thank you for your time, your efforts, and the realizations. So till we meet again. So this Wednesday we won't be there, and next Saturday also will not be there. So till then, but yes, while at the retreat, we will try to, at least for some time, if we can, come online. So be on the lookout. The group, we'll see like how the settings are. Anyways, Haribhai will be keep on posting the things. At least, if not the processes, at least by, because we don't know the facilities, especially if the connectivity and all those things. So at least for some time, if whenever possible, we'll put it on. So you might have to adjust somewhere in your odd timings as well. I don't know. So whatever it is, we'll see. Okay. So till we meet again, now, as we say, and as I said, we will create a distance and a hiding so that when we meet again, that will be like beyond boundaries. Okay. Thank you so much. Remember all that has been said. अगर भूल गए तो फिर से देख लो. Till we meet again. Aham Brahmasmi Tattvamasi. Hara Hara Mahadev.